सिर्फ 25 पेज अंग्रेजी में लिख देने से पिटीशन नहीं बन जाती है। किताब लाए नहीं लाए, सीनियर को बोलिए कि हम बिगर किताब लिए अगली बार कोर्ट में नहीं जाएंगे, हमें डांट पड़ती है। Your Honors, the arguing counsel is keeping unwell. However, there is a very limited relief which we are seeking in this petition. जी Fair investigation be conducted on the petitioner, keeping into consideration the past investigation being committed by the authorities on 25th February प्रेयर क्लॉज 2007. पढ़िएगा, आपकी पेज नंबर 25 पर प्रेयर क्लॉज पढ़िएगा। Indeed, yes. Issue a writ of mandamus to the respondent 1 to restrain itself from taking cognizance on the frivolous complaint filed by respondent 2 to 4 after acknowledging the past लॉ investigation. क्या है, इसको रुक जाइए। लॉ क्या है? Once a cognizable offense is brought to the notice of the police, what is their duty and can they be stopped from taking cognizance? Indeed not. But an investigation is already being taken place, and the conclusion of that investigation was इन्वेस्टिगेशन कब चालू होता है? इन्वेस्टिगेशन कब चालू होता है? after lodging of FIR. आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ Yes. एफआईआर। तो आपका पहला रिलीफ तो यहीं खत्म हो गया। कैसी पिटीशन बनाते हैं हवा में? Yes. Once investigation is already going on, that means that FIR has been registered, because without registering FIR they cannot investigate a matter. Indeed. ठीक है, तो पहला रिलीव आपका सुपरफ्लुअस है। ठीक है, we cannot restrain them from taking cognizance on the complaint made by anybody. चलिए अब चलिए। Indeed, yes. डायरेक्ट रिस्पोंडेंट नंबर 1 टू इनिशिएट एक्शन अंडर सेक्शन 211। अब पढ़िए, सेक्शन 211 पढ़िए। किताब लेकर आइए प्लीज। कितने साल हो गए आपको प्रैक्टिस करते हुए? 1.5 years. ठीक है, अभी आप नए हैं, प्लीज डेवलप दिस हैबिट। किताब लेकर आइए, रिलेवेंट जो भी प्रोविजन है उसकी किताब लेकर आइए। पढ़िए, 211 पढ़िए। सीआरपीसी आईपीसी आईपीसी देखो आईपीसी 211 आईपीसी में क्या लिखा है? इसमें देखो False charge of offense made with intent to injure. Whoever with intent to cause injury to any person institutes or causes to be instituted any criminal proceedings against that person or falsely charges any person with having committed an offense, knowing that there is no just or lawful ground for such proceeding or charge against that person, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years, or with fine, or with both. And if such criminal proceeding be instituted on a false charge of ये an कब मालूम offense, पड़ेगा कि चार्ज फॉल्स है? कब मालूम पड़ेगा? after जब इन्वेस्टिगेशन पूरा हो जाएगा, प्रोसिक्यूशन फेल हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी प्री मैच्योर्ड है आपकी। चलिए अब नहीं, अभी आप नए हैं इसलिए आपको समझा रहे हैं। अब चलिए 7.3 पढ़िए। investigation against the conduct of responding number 1 be also ordered as there is blatant breach of constitutional right of the petitioner, expectant of fair investigation in the matter in terms of article 20 and 21 of the आपके तो constitution. तीनों ही रिलीफ गड़बड़ है। जब एफआईआर दर्ज हो गई तो पहला रिलीफ नहीं दिया जा सकता। वी कैन नॉट रिस्ट्रेन देम फ्रॉम टेकिंग कॉग्निजेंस। सेकंड रिलीफ नहीं दिया जा सकता 211 जब तक कि जो इन्वेस्टिगेशन होकर यह साबित ना हो जाए कि जो है उनकी कंप्लेंट फॉल्स एंड फ्रिवलस है। ठीक है, तब उसको आप क्या करेंगे? विड्रॉ करेंगे कि मेरिट पे चाहते हो? Your Honors, I want to highlight page number 74 of the petition, 74 please. wherein the report was given by the DSP Bhopal, हाँ, wherein he stated that this matter is related to the property and there is what no, is the locus of this DSP? he is, what is the locus of this DSP? एफआईआर किस तारीख को दर्ज हुई है? Your Honors, this was a complaint letter written by the responding number उसके 2. बाद एफआईआर कब रजिस्टर हुई है? So, Your Honors, we have filed an RTI with respect to this fact because we have directly received this. We are getting verbal harassments from the authorities. कहाँ है वो? बताइए, कहाँ लिखा है आपने that you are being verbally harassed
by the authorities. और ये तो prayer भी नहीं है आपकी, that authorities are trying to verbally harass you and they be restrained from harassing you. कहाँ बताइए prayer, आपका शुभ नाम बताइए वकील साहब। आदित्य छाजेड़। आदित्य छाजर साहब बताइए कहाँ लिखा है ये बात आपने पिटीशन में, that authorities are verbally harassing you? Paragraph 5.11. 5.11 पढ़िए। That when the petitioner kept getting continuous harassments and threats from the respondents, the petitioner wrote a detailed representation to the Commissioner Bhopal on 29th April 2023. ये आप किसको प्रीएम्प्ट करना चाह रहे हैं? इसमें कौन सा रिस्पोंडेंट है जो कि पुलिस अधिकारी है, जो प्राइवेट पर्सन है? रिस्पोंडेंट्स, Respondent 1 is रिस्पोंडेंट नंबर 1 कहाँ लिखा है भाई आपने? details. Your Honors, at least a limited relief wherein this detailed representation may be considered by the. No. Your remedy is somewhere else. If it appears that the case of the complainant is that they belong to SC/ST category and their land was sought to be alienated in favor of you or your company, that's some private limited, in the year 2014, Indeed. and now they are claiming back their land on the ground that they being members of SC/ST without the permission of the competent authority as is mandatory under MPLRC, no land could have been alienated in your favor. This is the case. Indeed, yes. चलिए, इसकी रेमेडी सिविल कोर्ट में जाइएगा, वहां पर लगाइएगा। At least a limited कुछ नहीं, relief कुछ may be अरे, granted. आप बड़े वकील हैं, बड़े वकीलों के लिए दिक्कत यही होती है। बड़े वकील उल्टी सीधी पिटीशन बनाकर आ जाते हैं और सोचते हैं कि उनकी शक्ल देख के रिलीफ दे दिया जाए। If I may, बताइए क्या करेंगे? विड्रॉ करेंगे, मैरिज पे चाहते हैं? sir, with the liberty to, Liberty- we have already filed a civil. Liberty to pursue remedy in before the appropriate authority. लिखिएगा, Shri Chajad prays for withdrawal after arguing at length and unable to convince this court about the maintainability of this writ petition. Prays for writ petition within bracket criminal. Prays for withdrawal of this petition in as much as the dispute is purely within the domain of civil matter. Allegation of the private respondents is that petitioner, in violation of the provisions contained in MPLRC in regard to alienation of land belonging to tribes, obtained a sale deed in a fraudulent manner. As a result, they initiated proceedings for return of their land. Now, with a view to save petitioners, save the so-called sale deed, this petition is filed making several allegations which are not substantiated. Therefore, petitioner prays for withdrawal of this writ petition with liberty to file appropriate proceedings before the appropriate court. The said liberty petition is dismissed as withdrawn. 24 Gujarat